Welcome everybody. Good morning. My name is Siddhi, and so now we'll be starting with the debate event. For this week, we have our volunteer Yathat who will be hosting it. So this stage is yours, Yathat. You can go ahead. Thank you so much, Siddhi. And good morning to all the participants and all the people here to watch the event. So I am honored to be the host of the event. Myself, Yatha Sharma. I am right now completed my education and waiting for my job to start. All right. So so without further wait, uh, let me just walk you through the topic and what I'll give you a brief of what all will happen. All right. So the topic, first of all, I hope I am uh, like everyone is comfortable with English, or should I speak in Hindi too? Like I am comfortable with with Hindi too. Whatever works. Anyone? Response? Yeah. Uh, Yes, Rajat. हाँ सबसे पहले तो था तो भाई आपको गुड इवनिंग और बाकी के Good मेंबर्स morning. को भी Good morning. आई थिंक जो मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब इंग्लिश में बोलना चाहे वो इंग्लिश में बोल सकता है और जो मतलब जैसे कि मैं हूँ तो मेरे पर मतलब प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती तो मैं हिंदी में हाँ भी हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बात नहीं, रख सकता हूँ मैं बस कह रहा हूँ कि जो मैं कह पा रहा हूँ वो सबके समझ आ रहा है, बस इतना। या All right, perfect, perfect. So the topic for today is online education will replace the traditional schooling systems in India. Okay, and we have advocates for and against. Both of the teams are present here. All right, and as you all know, like education is the cornerstone of of a nation's progress. All right, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना ही अच्छा डेवलपमेंट, उतना ही अच्छा ग्रोथ एक कंट्री का होगा. Alright, and India is rich in diverse culture, places, values. So like education plays a very important role in this huge nation with a huge population and huge area. All right, and so on one side we have for the topic people that believe that on like online education and the developing technology can actually change the traditional education system in India. And then we have people for against the topic that still think that yeah, traditional education systems will be there for a long time. All right, and let's start with the debate event. And as you all know, and I will just give you a brief of it too, that first the leader will speak, then the support will speak, and then the whip will speak, and this will go in an alternate way, first for the event and then against the event, against the topic. My bad. Okay. So all the participants will be given around 5 minutes to speak, and you can put your points forward and just share your insights with facts and logical reasoning, and yeah, enjoy yourself. All right, so first of all, we have for the event team, and in that the leader of the team, Shubham Patel. So Shubham, the stage is yours, the time is yours. All the best. Thank you, Yatharth. First of all, a very warm good morning to everyone, all the participants who are participating. Good luck to them. So, so myself, Shubham, me and my team are supporting the belief that online education will replace the traditional education systems in India. We all have
evidently seen this shift during the COVID time, when the country was locked down, and there was no way to go out and attend classes or meet. So their online education system has handled the whole of education system of India. So I would iterate through some of the points that supports this belief that online education system will replace traditional education system. First of all is accessibility to all. Uh, not not everyone in India is privileged to have good education system. There are many constraints for that. There is infrastructural constraint that all the good faculties, all the coaching institutes cannot be present at all places. So for online education, we just need internet and any electronic device for our education purpose. And we have seen this shift in the latest, it is 2 years, where the students are doing good, and there are a lot of success stories of people who are coming from rural background and performing really well in the competitive examinations, getting job in the technological field. The shift is there in all areas. Like suppose a student is in tier 3 college, and he does not have good accessibility to good faculty or teachers, but now with online education he could have that education and do well in his life. Second, and the most important point, is affordability. Not everyone is privileged enough to have good quality education, because like we as India, a lot of people come from very underprivileged background, where just supporting the needs of the livelihood is difficult, and we can forget about getting the education. But those students has the desire to do well in their life, and now education, online education has come handy to those. We can take a simple example of quota, where the online coaching fees is around 2 lakh rupees for IIT or NEET preparations. But we have seen the emergence of physics wala, which is providing the similar quality education in just mere 10,000 of rupees. See, the change is huge. And like in 2 years, there has been a lot of interviews and videos where people have performed really good, and it is all because of the online education. Uh, when coming to the other benefits for online education, we can see the easeability of online education, the flexibility of online education. We can study at the comfort of our home. This saves the commute time and the preparation time that we used to go to the coachings, carry our stuffs. And most importantly, we can study anytime. We might be productive in the night or during the evenings or anytime. So we could take the lectures at first the the comfort of ourselves. And and secondly, suppose we had missed the lecture or we want to go back and revise those lectures, we can easily do that in online education, where in offline education this is not possible. Like if we miss something, we only have to rely to our friends. We don't get that full quality content. Now I would put on some success stories that I have observed while researching for this topic. Let's take the example of physics wala. And like government services, there has been a lot of aspirants who are preparing from just YouTube. See, the education is free there. There are a lot of educators like who are providing free, like Abhinay Math is a channel. And similarly, in the technological world, people are preparing alongside their jobs, and also like they start preparing while they are in final year of their colleges. Now I would explain the personal experiences in which I were benefited from online education. During the COVID, we all were at home, and I was able to upskill myself through online education and get a better job.
Similarly, I have seen and talked with my friends who were in final year, and like they were in college, so obviously they cannot go to coaching at that time, but they took the online education and performed good at competitive examinations like gate or government services examination, and they had cleared that. So this has saved their 1 year of preparation time, which they could have taken after the college. See, this is a very big shift. And with online education, we just need it three things: internet, electronic devices, and the most importantly the desire to study. So I would say that in in compiling all these things, if one really wants to do good in education, he can with all those resources which is provided by the online education. So now now I'll rest myself, and like uh, the other members will explain more on this topic. Thank you. All right. Thank you, Shubham. The four team has gone like a good start. That's great. So Shubham here mentions about COVID times, and of course, not at all surprising. The COVID times really, boosted the online education, uh, the business. And yeah, he says that it is simple and easy, and it is for our convenience. Online education, we can do it at any time, we can do it from any place. That is actually some valid points. And he gave some examples of quota and uh like quota and physics wala, and how physics wala is providing such cheap and better education at lower price. So Yeah, Yatharth, you are not audible. like is everyone No. facing that, No, you're or like audible. You're audible. I can hear you now. now, or was I not audible the whole time? I think last 30 seconds you were not audible. Before that, it was clear. Is that so? My bad. Like right now, am I audible? First of all, I want to know that. I am. All right. So, as I was saying, the four team are off to a good start, great start, and Shubham here mentioned some great points to support his views, talking about quota and physics wala, and how online education systems are really cheap and affordable and at your convenience. So now we have the leader of the against topic, Rajat. So let's see what all he has to say on the topic. Rajat, the stage is all yours. सबसे पहले तो आप सभी भाई एंड सीनियर मेंबर को गुड मॉर्निंग। म म मेरा नाम रजत धाकड़ है और बेसिकली मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। तो आज जो मैंने जो टॉपिक जो चूज किया है वो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जो ऑनलाइन जो मतलब स्कूलिंग होती है उसके अगेंस्ट में वो किया है। तो मैं अपने जो पॉइंट रखता हूँ तो तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एनवायरनमेंट। जब हम मतलब ऑफलाइन में या मतलब स्कूल में जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं तो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि यदि आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट एक अच्छा है तो आप एक यदि नॉर्मल इंसान भी हो या नॉर्मल स्टूडेंट भी हो तो आप अच्छे माहौल को देखकर आप उनसे मोटिवेट होते हो और आप देखते हो कि आपका साथ वाला बंदा यदि 6 मंथ पहले यदि वो आपके लेवल में था और यदि 6 मंथ बाद में यदि वो आपसे अच्छा करके और वो एक अच्छी रैंक ला रहा है, जैसे कोई भी एल की में या मतलब कोई भी मैं यदि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं या मैं मतलब स्कूलिंग की बात करूं,
तो अपन देखते हैं कि यार जब अपने ज्वाइन किया था तब तो हम सेम लेवल पर थे, बट आज ऐसा क्यों है कि वो एक अच्छा है? बिकॉज बिकॉज यदि वो एक अच्छे टीचर के इफेक्ट में आ गया है, उसने एक अच्छे अच्छे टीचर से उन्हें गाइडेंस पा ली ले ली, या फिर उसके जो फ्रेंड सर्किल है, मतलब उसके फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो वो उनसे मोटिवेट होता है और फिर वो काफी मेहनत करता है। और जब हम मतलब जब वो और फिर जब मतलब हमारा अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, अच्छे दोस्त होते हैं, तो हमारी जो वीकनेस होती है वो हमको तो मालूम रहना ही चाहिए, बट हमारे जो है, यदि हम उनसे फीडबैक मांगते हैं कि मैं यहाँ पर वीक हूँ, मैं यहाँ पर क्या चीज नहीं कर पा रहा, तो वो हमें अच्छी, यदि अच्छे फ्रेंड्स रहे तो वो हमें काफी ज्यादा सजेशन भी देते हैं कि आप यहाँ पर, आप इस पॉइंट पर आपकी ये प्रॉब्लम है, यदि आप इसको राइट कर लोगे तो आप काफी अच्छा कर पाओगे। तो है फर्स्टली एनवायरनमेंट। तो जब तक हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, चाहे हम अकेले भी यदि लड़ते हैं, सपोज करो कि यदि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, उसमें सपोज करो यदि 291 लोग हैं, तो उसमें से यदि 290 लोग ये मान लें, सोच लें कि जो ये मतलब इंटेलिजेंट इंसान है या ज्ञानी है, इसने सब कुछ रीड कर रखा है, हम इसकी बात को नहीं मानेंगे, तो फिर वो मतलब अकेला भी फिर वो मतलब हार जाएगा उस टाइम पर। तो इसलिए मतलब एनवायरनमेंट का इसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। और और मैं मतलब एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा एनवायरनमेंट में, जैसे मैं टीसा की बात करूँ या ऑनलाइन एनवायरनमेंट में, जो हम जुड़ते हैं लोगों से ऑफलाइन मीटिंग्स में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो हमें मालूम चलता है क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, तब हम उन पॉइंट पर काम करते हैं, तब हम एक अच्छा लेवल पर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अटेंशन की। जब हम ऑफलाइन जब हम ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, और सपोज करो यदि टीचर हमसे कोई ये पूछता है कि कल मैंने रीड किया था, या कल जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो हमें ज्यादा मतलब ज्यादा मोटिवेट होते हैं, बजाय मतलब ऑनलाइन में हमसे कोई टीचर बोल दे कि तुम्हें ये करना है, तो हमें एक मीडियम स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है तो हम टाल जाते हैं। बट यदि सपोज करो उस दिन टीचर ने हमें ये बोल दिया कि तुम मतलब स्टैंड अप, और फिर हमसे कोई वो पूछे सवाल, तो हमें सपोज करो वो नहीं आता है, तो हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती अपन अपन फील करेंगे, या अपन को इतनी वो बात वो होगी पिंच कि उसके नेक्स्ट डे अपन उसको मतलब वो करेंगे, ट्राई करेंगे कि आगे से मैं जो हूँ ऐसी मेरे से बोलना हो, और मैं आगे से इसको मैं ट्राई करने की वो करूंगा कोशिश, कि मैं मतलब आगे से मतलब मैं प्रिपेयर होके आऊंगा। फिर उसके बाद में आता है रेगुलर एंड हेल्दी कंपटीशन। सपोज करो यदि हमारे मार्क्स वो आगे कम आ गए और हमारे साथियों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो अपन उनसे 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 अपन ये जान पाएंगे कि क्यों उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अपन उनको ऑब्जर्व करके चीजें देख सकते हैं, या उनसे बातें करके भी अपन ये चीजें देख सकते हैं। तो मतलब ऑफलाइन में ये एक अच्छी पॉइंट होता है, भी हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हम एवरेज स्टूडेंट होते हुए हम काफी अधिक ऊंचाई पर पा जा सकते हैं। और जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट होते हैं, एवरेज वो ज्यादातर होते हैं, चाहे कोई भी कोचिंग में हो, चाहे कोई भी हो। तो जो मीडियम लेवल जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ऑफलाइन ज्यादा बेटर है आई थिंक। और यदि मैं बात करूं मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चे, तो यदि जो मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, यदि आप उनको मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन दोगे तो उनको वो ज्यादा उनको लाइटली लेंगे, और उनमें जो एक डिसिप्लिन होगा वो एक ज्यादा वेल मैनर में नहीं होगा। वो ये सोचेंगे कि ऑनलाइन आ रहा है, जैसे जो मूवी या कार्टून चलते हैं वैसे चल रहा है। बट यदि हम ऑफलाइन में उनको लाते हैं, उनको एक उनमें एक डिसिप्लिन होता है, अपन वो उनमें उसमें मतलब जागृत होता है। इसके अलावा एक उनमें नैतिकता भी आती है, कि जैसे अपन स्कूल में जाएं तो अपन वहाँ पे अपन कुछ मॉरलिटी भी सीखते हैं, कि अब हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे जो टीचर्स होते हैं हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी हमेशा रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये चीजें भी हैं, मतलब ओवरऑल यदि मैं मतलब देखना हूँ, हमारी जो ऑफलाइन एजुकेशन से हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट आता है। सपोज करो यदि मैं अभी स्कूल में 10th क्लास में हूँ या 9th क्लास में हूँ, हमारे स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है और हम उसमें कोई रोल प्ले देना चाहते हैं, तो हम यदि रोल प्ले उसमें अटेंड करेंगे तो हमारे ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि रोल प्ले की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। तो हम उन सारी चीजों को एक वेल मैनर में लेके चलेंगे, इससे हमें एक जिम्मेदारी का फील होगा, और हम उस काम को एक अच्छे हम ट्राई करेंगे कि
उस काम में अपना बेस्ट दें और अपना 100% दें, इससे एक जिम्मेदारी भी आएगी और इनसे हटके एक बाकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी अच्छा होता है। ऑफलाइन एजुकेशन में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, अंदर लोग होते हैं, हम उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है हमारी। तो जब हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इस कदर डेवलप हो जाएगी। जैसे सपोज करो, यदि मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मैं क्लास में मतलब सब चीज स्टडी करके गया, तो गया तो सभी ने मेरे को अप्रिशिएट किया। बट यदि मैंने कहीं पर कोई काम कर दिया, रॉन्ग मेरे से बात निकल गई, तो सभी मेरे को उसमें मेरे को डांट भी लगेगी और मेरे को काफी ज्यादा रिजेक्शन भी झेलने पड़ेंगे। तो एक तरह की जो मतलब एक्सेप्टेंस की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं वहां पर भी अपन मतलब सीखते हैं उसको। और मैं ये बात करूँ तो ऑनलाइन स्टडी में जब हम जैसे अपन फोन पे मोबाइल में अपन मतलब ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं, तो काफी बार हमारे जो व्हाट्सएप को तो हम सब चीजों को तो अपन ऑफ नहीं कर सकते उस टाइम, जो कुछ टाइम चलते हैं, तो हम जो मतलब काफी बार ऑनलाइन स्टडी के टाइम पे जब हम क्लास ले रहे होते हैं, तो काफी बार तो क्या होता है, काफी बार अपन और जो वो नोटिफिकेशन से अपन अपनी जो स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज करो मैं एक लेक्चर देख रहा हूँ, उसको मेरे को अभी थोड़ी सी देर रह गई है, और सपोज करो किसी का और मेरे को फोन आ गया, मैसेज आ गया, तो थोड़ा सा माइंड हटता है उससे। तो इससे अटेंशन भी थोड़ी वो होती है। और काफी बार क्या होता है, ऑनलाइन से यदि एग्जाम हो रहे होते हैं क्लियर, तो जैसे सपोज करो यदि नीट का एग्जाम या कोई जेई का एग्जाम कभी ऑनलाइन में हुआ, और उसमें कोई एरर आ गया, और हमारा जो कंप्यूटर है या वो चीज है जिसको हम एग्जाम दे रहे हैं, हमारे क्वेश्चन छूट गए या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर जो वो होते हैं, फिर जो इसकी प्रोसेस होती है ना, वो बहुत ज्यादा बहुत ही लेंथी होती है। यदि हम उसमें जाएंगे कि हमारा लैपटॉप वो हो गया खराब, हो कंप्यूटर खराब हो गया, तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि ऑफलाइन में ऐसा ऐसा होने की संभावना काफी कम है। और जो ऑफलाइन में चीटिंग का भी वो काफी कम है, क्योंकि चीटिंग आप एक वहाँ पर टीचर रहता है, तो आप उसमें चीटिंग नहीं कर सकते। जबकि मैंने ऑनलाइन में ये देखा है कि मैंने एक फ्रेंड थे काफी जो कुछ थे, जब वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम होते थे, तो उनके एग्जाम में जो स्कोर आ रहे थे वो काफी अच्छे आ रहे थे, मतलब 700 650 और 720 में थे नीट में। तो उस टाइम मैंने उसको देखकर लग रहा था कि इनका तो होगा, श्योर सिलेक्शन होगा। बट जब उनका नीट का जब एग्जाम हुआ रियलिटी बेस्ड, तो जब उनके नंबर आए तो उनका नहीं हुआ, काफी लो नंबर आए, फिर वो उन्होंने मतलब नहीं किया, बाहर चले गए ब्रो। तो इससे भी देखने को मिलता है कि ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन में अपन यदि हमें ईमानदारी है, बट ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है, या बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनमें होती है, बट जिनमें ईमानदारी नहीं होती है तो वो चीटिंग करके भी अच्छा ले आते हैं, और खुद को फैमिली के बारे में सामने और अदर लोगों के सामने खुद को वो हो जाता है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ वास्तव में। फिर इसके बाद में जो मैं बात करूँ टीचर की, तो टीचर का हम पे अटेंशन होता है, यदि हम अच्छा कर रहे हैं, यदि हम किसी दिन रॉन्ग करते हैं या हम कोई गलती करते हैं, तो हमें डांटता है। जब 60 स्टूडेंट की वो क्लास है या 100 स्टूडेंट की 150 स्टूडेंट की, हम हमने कोई हाथ पूछा क्वेश्चन, हमने कोई रॉन्ग क्वेश्चन, वो डांट देगा, हमसे कुछ बोलेगा, तो वो बात हमें पिंच होगी, तो हम उससे मोटिवेट होंगे कि नहीं मेरे से कहाँ गलती हुई। और मैं बात करूँ, यदि हकलाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनके सबसे बड़ा फायदा है कि वो स्टूडेंट यदि वो ऑफलाइन क्लास में यदि उन्होंने स्टैंडिंग में काम किया है, तो वो जाएं और हाथ रेज करें कि सर आपने अभी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया था सर, इसमें यदि इसकी जगह ये होता है, या इसको आप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सर। जब हम सबके सामने से बोलेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो फियर होता है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होता है। हो सकता है कि टीचर या स्टूडेंट हमने कोई ऐसी बात बोल दी, हमें डांट दे या हंस दे, बट हमें उससे भी एक, यदि हमें उस टाइम भी यदि रिएक्शन मिलता है, तो उससे भी हमें एक मतलब एक्सेप्टेंस की भावना आती है कि यदि मेरे को रिएक्शन मिला ठीक है, बट मैंने ट्राई तो किया। बट यदि हम अपने स्टेटमेंट में काम नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें ये फियर होता है, खास करके जो हकलाने वाले बंदे हैं उनमें ऑफलाइन की यदि काफी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, यदि वे अपने अंदर जान जाए कि मेरे को अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। ऑफलाइन में मैं बात करूं तो हमारे अंदर एक अच्छा ग्रुप रहता है, तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब स्टूडेंट और टीचर, जैसे स्टूडेंट है अपन काफी बार बोलते हैं कि मतलब ऑफलाइन में जाने आने में टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कहाँ होता है, आप यदि कहीं पर जाना है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जाइए, अच्छे दोस्तों के साथ।
तो बोलिए यार, तुमने कल ये टॉपिक रीड किया था, उसमें क्या था वो? तो अपन उसमें आपस में डिस्कशन हो सकता है। अपन ने, टीचर ने हमें पढ़ाया, हमने रूम पर अगर पढ़ा और अच्छे से प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद हमें जाने आने में उनको एक बार वार्तालाप में ले लेते हैं, तो हमारे वो माइंड में ज्यादा चीजें फिट हो जाती हैं, उसके लॉन्ग टाइम तक स्टेबिलिटी। और जो मैं बात करूँ यदि रूरल एरिया में, तो जो गांव है हमारे, जैसे मैं टाउन से आता हूँ, उसमें जो गांव है, वहाँ पे तो केवल लाइट ही बहुत कम आती है, और लाइट कम, और मतलब इंटरनेट की भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पे मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन है, हम वहाँ पर ज्यादा वो नहीं हो सकती, मतलब वहाँ पे काफी चैलेंजिंग होती है। और फिर मैं बात करूं, तो ऑफलाइन एजुकेशन से हम वेरियस चीजों को लर्न करते हैं, हमें उससे डिसिप्लिन सीखते हैं। ऑफलाइन एजुकेशन से हमें पंक्चुअलिटी आती है। यदि हम ऑफलाइन एजुकेशन लेट हो गए, तो हमें टीचर डांट के या हमें स्कूल से बाहर भी दिया जाता था कि अब वापस से जाओ घर, आप लेट आए हो, अब ऐसे रोज तो नहीं चलेगा। तो हमें बैड फील होता था, तो हम ट्राई करते थे कि अगले दिन हम टाइम पर स्कूल में जाएं। और यदि मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ, हमें कोई भी मतलब स्पोर्ट में प्ले करना है, स्टडी करनी है, या जैसे स्पोर्ट, फुटबॉल या रनिंग या कुछ भी करना है, तो हमें एक उसमें डिसिप्लिन की वो जरूरत रहती है। तो हमारे सामने एक हमारा वो रहेगा, कोच रहेगा, तो वो हमें डांटेगा कि तुम यहाँ पर ये गलती कर रहे हो, वो हमें कुछ भी बोल सकता है। तो फिर हमें लगता है कि यार नहीं, जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एक वो भी चीज में आती है। फिर मैं रजत बात जी, करूंगी रजत ओके। जी, लाइक और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें भी थोड़ा मौका दीजिए बोलने का। ओके सारे 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 पॉइंट्स आप ही बोल देंगे तो आपके जो और लाइक और जो आपके साथी हैं वो क्या बोलेंगे। ओके ओके, ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट, सो सॉरी मैं अभी अबाउट दैट, अपनी बट यहाँ पर खत्म करता हूँ। आई कैन नहीं अंडरस्टैंड नहीं, आपके ठीक पास है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आप पूरा प्रिपेयर होके आए हैं, बट हाँ, और भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, ओके ओके, ग्रेट ओके ग्रेट। रजत जी, एक्चुअली थैंक यू। एक्चुअली मैं, हाँ, ओके। ओके रजत जी, तो आपने काफी सारे पॉइंट्स, आपने सब कुछ कवर किया, फ्रॉम टॉकिंग टू दैट इन्वायरमेंट जो कि एक मिलता है, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन स्कूल में, और आप आसपास और कंपटीशन देखते हैं और आइडियाज आते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप फेस टू फेस इंटरेक्शंस होती हैं, एक पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ओवरऑल। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ये, एंड ग्रेट फ्रॉम द अगेंस्ट टीम टू, perfect. And now from the for team, we have Sanjay with us. Sanjay is also our part of our team, like hosting team, debate hosting event. And before that, I would also like to ask the participants that are not in the debate event, but they are as guest here, Himanshu, Lakshay. They can also give their points on this topic for or against whatever they believe, and they will also be able to get a chance to speak. All right. Okay, Sanjay, back to you. The stage is yours. है 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 Hello everyone, and thanks Yatharth for giving me giving me that chance, and a very g- 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 good morning. So and so so the Ra, Ra, Rajat Dhaked has told the advantage of told the advantage of the traditional education system. That was nice. So
Uh, Now I want to present my view on the online education uh, versus the traditional educations. So yeah. So first point from my side is that accessibility and flexibility. That my team leader has said that about accessibility and flexibility. So I want to add some point in that. First, accessibility in online education. We can see that um, sorry. Okay. Okay. So in our online education, we can see that uh, uh, there are no barrier for any student. Like if I am standing, if I am sitting in Delhi, and I can also learn from any any state, means I can learn from teachers in any states. So so I think that is not possible in the tra- traditional education systems. And flexibility means in traditional education system there is a time, means there is a time for school opening then closing, so we need to prepare for that, then go to school, and then like. But in online education system there is no time for any classes. Like if uh, like if you are doing some side hustle with your study, and sometimes you feel that, oh no, now I am not free, so you can reschedule your classes with teachers. um, because because education is not about only like you are only school and colleges, right? Education also, if you are study after college, like you are working and also you are studying. So in that case, if you are not able to attend your college classes, then then you can prefer your timing, and you can attend the online classes. So I think in that way the online classes are the most profitable for a student. Okay. And second is personalized learning. Like in online classes, in online educations, if some student have some weak areas, so he or she can schedule her or his uh, personal training classes with that students. I think that is not possible in offline education. Like because offline education the teachers have doesn't have that much time, so he can provide a personal training. But because in online in sorry, in offline education there are some limited of time, but in online education you can learn it any time, so you can reschedule a personal training at 9 10 any time. So third is technological innovations. Like in online education now we can see that there are a lot of technology like AI and the AR VR, means we can learn through AR VRs and through AI. Means AI is a great tool, and it also increase the quality of education. I think that is not possible in offline education. And yeah, sorry. Mm. and and the my next point is cost effective. So just yeah, my next point is cost effective. Means we uh, that my leader has told that about the physics wala and the quota, means that are cost effective. Yeah, means online education have cost effective um, uh, positive one. Like if mm,
like if you want to learn a skill, and if you go to a coaching center and then learn that skill. So I think if you go to coaching center, then there are costs not from student side, also from the teacher side. Like, teacher, I need to rent a room, then in that room there are some tables, there are blackboards, teacher has to come. So there are a lot of space where a student can sit, and like there are a lot of costs from teacher side and also student side. And third point is, uh, in traditional education system the teacher have some sufficient amount of student. Like, at a time teacher can only teach like 20 or 30 students, because there are some limited space in his classroom. But in if we ka, 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 come to online education systems, mm, if we come to online education systems, there are no limitation for students. Means there are unlimited students can join our online class. So firstly, the online class can reduce the uh, cost of a classroom, and the fans, the electricity, everything. Means online education, that's online education reduce all the costs. And second is the student limits. Uh, Number of students can join. So that means the cost and the number of students, that decrease the cost of education. Right? So teacher can give the education of lot of students with lower cost. So means some students that are from the middle class, like from Blaze, they can also uh, learn things from the higher level of teachers. And third is, and sorry, the next point is that I also felt in online education we have lot of choices. Like, uh, in offline we have some limited choices. Like, if I want to learn some programming language, then I can learn from that students, sorry, that teachers only. But in online I have lot of choices, I can learn from any state. So I have many teachers from where I can learn the programming language. Yeah. Okay. Yeah, your thoughts. So I think that's from my side. Okay, Sanjay. Great points and some new points too. I could see that there were some very new points other than Shobham's. So one of the points that you mentioned is that the cost of education will decrease, like the area of classrooms and electricity and all that will be, reduce, decrease, and it will at the end help the students only, because that will make the courses and all cheap. And you talked about versatility of the courses and teachers. It is provided in an online platform. You can choose the course, which course specific. You can be specific with what course you need, what teacher you need, what who you know like every student gets like every student has its own grasping power. So not every teacher can help every student. There are some teachers that explain a lot better than others. So you have that choice in online education. So great point. So now we will go ahead with the event, and I would like to invite the guest, the people who came to see the event, to share their views on the topic. We have Lakshay and Himanshu.
So anyone who wants to come up on the stage and say some views you have on the topic. So I will just repeat the topic. I think we all know the topic, but still the topic is online education will replace the traditional schooling systems in India. So this is the topic. And if Himanshu and Lakshay have some points and views on this topic, feel free to unmute yourself and deliver the topics, the deliver the views you have. Come on, guys. It's all right. It's an like open event. Am I audible? Right? I hope Yes, I yes, am audible. yes, you're audible. Okay. Okay. Yes, Lakshay. Hello, hello. Good afternoon, all. My Good. name is Laksh Goyal. Hi, Lakshay. Yes, hello. Uh, Yeah. So my yeah. Go ahead. yes, my point on this topic is topic ये है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगी या नहीं। तो इसका एक शॉर्ट में आंसर रहेगा, तो मैं बोलूँगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमंस को इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है फिजिकली। तो स्कूल्स कॉलेजेस जैसा पहले चलते थे तो वैसा तो सेम चलते रहेगा। प्लस साथ में ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ये है कि अलोंग विद स्कूलिंग और कॉलेज स्टडीज जो इसके साथ में और कुछ चीज़ें जो सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन की मदद से वो उसी टाइम में सीख सकते हैं, जिनके लिए उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर बैठ के या अपने जो भी कंफर्टेबल उनको एटमॉस्फेयर लगता है उस टाइम पीरियड पे या प्लेस पे वो सीख सकते हैं। तो दोनों जो एजुकेशन सिस्टम है वो पैरेलली चलते रहेंगे। प्लस अभी जैसे कि हमारे एक मैं नाम भूल गया, उन्होंने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया था AR VR वाला, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जो एक गैप था कि हमारा एक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं रहता था लोगों से, लेकिन AR VR की मदद से अभी कई सारे ऐसे सेंसर्स बन रहे हैं और वहाँ पे और ग्लासेस बन रहे हैं जिससे को पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि वर्च हम एक फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं। और जैसे कि हम जैसे क्लासरूम में बैठ के हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, हाथ मिलाना या कुछ ऐसे टीचर सामने खड़ा रहता है और बच्चे पूरे एक क्लास में बैठे रहते हैं, तो वो हमको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी में मिलेगा। तो वो ऑफलाइन की एक एस्पेक्ट को पूरा करेगा, हालांकि वो आर्टिफिशियल चीज रहेगी, इसलिए वो रियलिटी को तो कॉम्पीट नहीं कर पाएगी उसके साथ, लेकिन कई हद तक इस चीज को लोग उससे बेनिफिट ले पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम दोनों ही अपने पैरेलली चलता रहेगा। थैंक यू। Thank you, Lakshay. A very great point that was missed by other participants. That yeah, actually AR/VR is trying its best to provide that experience from your home, to provide that uh, offline environment in your room only. So great point. Uh, Thank you. so Himanshu, you have any point for us?
All right. So I guess every participant has spoken about it, given their views. Siddhi, uh, do we have anything else for the participants, or shall we wind up with the event? Yeah, so like if you want to, so since everybody has spoken, if you want to add on with something else, or like have a certain sort of group discussion in which everybody can speak, if you have something of that sort, you may go ahead, or else we can end this event. Yeah. Like on top of my head, I don't have any other points. If any of the participants has some other points that they thought were there, but they were not able to speak about those specific topics, they are feel free to share those views as well. And yeah, like after that we will wind up the meeting. Great discussion on this topic. Okay. Yeah. Anyone? Rajat, sorry to we had to interrupt you. You can finish your points now if you या want. एक्चुअली मैंने उसमें मोस्ट ऑफ पॉइंट तो मैंने उसमें कवर कर दिए थे, बट मैं एक जो इस पूरे डिस्कशन का जो सार जो समरी है मैं बोलना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ऑफलाइन वो तो बेहतर है ही, बट मैं इसमें क्या कहता हूँ, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन तो बेहतर है ही, बेस्ट की बात करें, बट हम ऑनलाइन से इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यदि हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि हम कोई हाई कोचिंग अटेंड कर पाए, तो हम ऑनलाइन से इसको मैनेज हो सकता है, बट मैं बेस्ट की बात करूँ तो वही मतलब ऑफलाइन ही होता है। और ऑनलाइन में जो एक अच्छी चीज है वो ये अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, और एक ऑनलाइन में अच्छे टीचर और लो कॉस्ट मिल जाती है। बट यदि हम दोनों चीजों को ऐड ऑन कर दें, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, काफी बार जब हम स्कूल में या कोई रीजन से कोई बहुत ज्यादा रीजन आ गया, हम स्कूल नहीं जा पाए या कॉलेज नहीं जा पाए या कोचिंग नहीं जा पाए, तो उस टाइम में दिक्कत होती है क्लास की। तो ऑफलाइन में यदि वो जो ऑफलाइन हो रही है क्लास, हम उसको भी अटेंड करें, और जो वो उस इस क्लास की यदि वो रिकॉर्डिंग होती है, काफी बार मतलब होती है, तो हम उस ऑनलाइन फिर हम रिकॉर्डिंग को भी देख के अपन उसको ट्राई कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अब जो ऑनलाइन भी आ गया है, तो मतलब ऑनलाइन से भी अच्छी चीजें ले लो, और जो ऑफलाइन है मतलब ऑफलाइन से भी अच्छी चीजें ले लो, तो एक हम बेहतर एक उत्तर इसका दे पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, और आप सभी को सार्थक भाई का एंड डीएम का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने शायद मेरे को ज्यादा टाइम दिया। मैंने मैंने टाइम तो केवल 5 मिनट का था, बट मैंने पहले भी शायद ज्यादा बोले, मेरे को ध्यान नहीं रहा था। बट क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डिबेट इवेंट था तो मेरे को मालूम नहीं रहता है, बट मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं ट्राई करूंगा कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपनी ए स्पीच ए स्पीच को रखूँ। सो थैंक यू आप सभी को। Thank you, Rajat. Yeah, Sanjay had raised his hand. Sanjay, you want to Yeah. speak? Yeah, tha, tha, tha. Thank you, Yatharth, for giving me chance. Means I think this is a fun fact. Fun fact, like we all have experience in the class. Like if some teacher uh, told some bad word to a backbencher, then backbencher uh, means मैं हिंदी में बोल देता मीन्स बैक वेंचर धमकी देता था कि टीचर से तू बाहर निकल, फिर मैं तुझे मतलब कुछ करता हूँ। आई थिंक ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पाएगी। टीचर कुछ भी बोल दे, ऑनलाइन में मतलब बच्चे टीचर से ऐसा नहीं धमकी टाइप नहीं कर पाएंगे। या एंड या ये it is a fun fact. And so, and second thing I want to add, that is yeah, means traditional education system have some year, means we have lot of year of experience in that traditional education system. So we can't replace traditional education system with the online education system. Means traditional is not totally replaceable.
but what we can do like the hybrid education systems. In somewhere we can use online education systems, or somewhere we can use tradition, like if children are in their starting phase of education, like lkg, first, third, second. I think in that phase we can use traditional education system, and after that, like in 11, 12, or maybe after college, or in college, we can use the online education systems. Like, so like hybrid type of model in India, we can use hybrid model for education, not traditional, not online. So that I want to add. All right. Thank you, Sanjay. Yes, Shubham. Hello. As everyone has said that both the forms of education has its advantages and disadvantages. I agree that the solution lies somewhere in between. And the point that Sanjay has mentioned, I was going to say the same thing, that maybe we could use both the education in phases, like for the early development of childhood, offline education is needed because he's not smart enough to study on his own. But once we reach a certain age and develop the habit of self study, then I believe the online education is really helpful because it provides a lot of benefits. So if both are utilized wisely, so yes, that's the solution. All right, Shubham. Thank you. So I think like the conclusion of the topic is that yeah, hybrid system is the best. Yeah, and like exactly from for a young student, they don't really know the benefits of the education they are being provided, but after a certain age, you have a grasp that yeah, education, why we are doing all this, why we are learning all this. You get a grasp of all these things, and then you know what is best for you. And after that you can study on your own. You can uh you are on your feet now, and you know what is best for you. So after that you can try that online system. So yeah, that's all. We will have a poll which which you will vote on, and you will tell which side had a better, better points they kept. So Siddhi, can you share the poll? Yes. Has everybody answered it? I hope everyone has answered the poll. एक्चुअली मैम जो आपने जो पोल में आंसर करने के लिए किया है, क्या वो उसमें क्या मतलब सभी को आंसर देना है मैम? हाँ हाँ, सभी को आंसर देना है। एक्चुअली मैम वो पोल मतलब हट गया है, जो ऑप्शन आया था स्क्रीन पे से, अब वो ओपन ही नहीं हो रहा। मतलब आप इसको वापस से वो कर सकते हैं मैम शेयर? वापस तो शो नहीं होगा, अभी वो आ गया है, रजत जी रिजल्ट आ आप, जाएगा। या मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ रजत जी की। तो आप फोन पे हैं या फिर लैपटॉप पे? चलिए कोई बात नहीं। आप आई थिंक पोल के रिजल्ट आ गए हैं। फॉर द टॉपिक हैज people think that for the topic has had better points than against the topic. Great for the for team. All right. Uh, Siddhi, do you have anything to add? And after that, we can finish up the meeting.
Yeah, I don't have anything to add because I think everybody was well prepared and they spoke about the topic really well. Like at the end, most of you said that hybrid mode is something which should be applied in a future, and you also explained about like how you can try out with hybrid mode as well. So I think even I agree to a certain extent. Both of the education modes, they are only there to help the students, and I like that everyone, the leaders especially, were very prepared, even for and against. And even though some of the participants, they were not able to attend the event, but I'm happy that we had some audience who also even Akshay, you also spoke about your top points as well. So thank you so much everybody for attending this event. It was Yathat's first event for hosting, so I think he did extremely well. If you have any feedback for him, so you can share that. So yeah, thank you so much. Thank you, Siddhi. Thank you. That just motivates me to do more and more, public speaking and take more tasks, challenging tasks. That all motivates me. Thank you so much. So with that, let's end the meeting and see you in 1 or 2 weeks with another topic and another set of discussion. All right. Okay. Have a great day ahead, guys. Thank you, everyone. Okay. Enjoy the Sunday. Bye. Thank you, everyone.